फर्स्ट जॉब का अगर फर्स्ट मैनेजर अच्छा मिल जाए ना, आपकी लाइफ काफी क्लियर हो जाती है. Right. I will definitely say, right? So there are sites, if you know, worldwide there are beta sites कहते हैं उसे. बीटा प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो टू गेट यूजर्स. Okay. Hello and welcome, guys. Today we have Nishith Gupta with us. He's co-founder of UxHack. Nishith, welcome to our podcast. Thank you, Ayush. Thank you for having me. It's a pleasure to have you. Why don't we start with basic introductions? Tell me a little bit about yourself, about UxHack. Sure, yeah. So I will say so. It's been like I have now around 14 years of experience. So I am not the actual, मतलब जो होता है ना स्टार्टअप का जनरली बोलते हैं कि यंगस्टर्स स्टार्टअप करते हैं. So in fact I started my journey of startup when I was married and I was going to have a kid. Wow. So मेरे किड का जो एज और मेरे स्टार्टअप का जो एज है वो सेम है ऑलमोस्ट. So I think so मैंने जब स्टार्ट किया था it was, you can say it was, अगर कोई आप एक्सटर्नली कोई पूछे तो it was the most wrong time. But ठीक है. So हाँ, so my background is, so I think मेरी upbringing, fortunately I will not say कि it's not a rags to riches story. I have been a decent middle to upper middle class वाला, you know, वो हुआ है मेरा upbringing. And typically Indians का क्या रहता है, वो स्कोरिंग अच्छी की 10th मतलब 12th तक, स्कूल तक I was okay in studies, तो अपना फाइंडिंग मिला. And then अच्छा मार्क्स से तो इंजीनियरिंग हुई because that is the default. तब जब मैं बता रहा हूँ 2001 12th when I passed, right? Then VIT I did my engineering from VIT Vellore again, you know, so 2006 where I'm a graduate of 2006. फिर उसके बाद वही फिर अगेन सेम डेस्टिनेशन की MBA करना है, MTech करना है, जॉब करना है. आई थॉट कि पहले मेरे को जॉब करना है, लेट मी सी क्या मेरे. सो आई हैव ऑलवेज टेकन डिसीजन, आई विल से दैट वे, कि थोड़ा जो भी उस टाइम जो अपॉर्चुनिटी थी उस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया. थैंकफुली माय पेरेंट्स डिडंट फोर्स मी, यू नो, कि नहीं यही करना है. So then I got a campus placement हुआ था Cognizant में, but then I did an off campus. तो Verizon करके एक कंपनी है, right. US based है, उसका IT centers are there in India, Chennai and Hyderabad. So yeah, 2006, so 2 years मैंने वहाँ जॉब की. उसमें fortunately in my first year of experience I got opportunity to travel to US. Wow. On behalf of Verizon. So yeah, it was going good. फिर then I realized कि while I enjoy coding, अच्छा लगता है टेक्निकल, बट आई वाज मोर ईगर टू अंडरस्टैंड कि और ये क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, यू नो, द क्वेश्चंस कि क्यों, मतलब क्या है इंडिया. थोड़ा जब आप जॉब में जाते हो, यू नो, you keep on questioning lot of stuff. And thanks to my manager, he was very open, you know, Chandra, who I found myself, you know, first जॉब का अगर फर्स्ट मैनेजर अच्छा मिल जाए ना, आपकी लाइफ काफी क्लियर हो जाती है. Right. I will definitely say, right? So yeah, so then I realized कि मेरे को MBA करना है, you know, and फिर 2000 फिर MBA किया IMT गाजियाबाद से, 2010 ग्रेजुएट. Then moved to the functional side of it. Again came back to IT Infosys. Work there for Infosys के अंदर स्टार्टअप सेटअप किया था. We'll talk about that later. And then वहाँ पे फिर रियलाइज हुआ कि यार मैं बड़ी कंपनीज नहीं, मेरे को अच्छा लगता है समथिंग, यू नो, स्क्रैच से बनाओ, यू नो, उसमें ज्यादा मजा है. सो यू नो, यू कीप ऑन रियलाइजिंग योर स्ट्रेंथ कि यार क्या मजा आ रहा है. तो Infosys obviously was a big setup. बट देयर आई गॉट एक्सपोजर, यू नो, कि क्या मजा है, यू नो, खुद स्क्रैच से बिल्ड करने का एंड उसको फिर मार्केट में ले जाने का. देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर स्टार्टअप जॉब्स, यू नो. तब भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आती कि अपना खुद का कुछ करना है, बट आई वाज लुकिंग एट, चलो अब मैं कोई स्टार्टअप में ज्वाइन करता हूँ. ट्राई मारा. देन लकीली, यू नो, टू द न्यू एक वेंचर उस टाइम फंडेड था, एंड आई केम टू अ प्रोडक्ट मैनेजर जॉब मिला वहाँ पे. देन आई गॉट एलिवेटेड टू प्रोडक्ट हेड, प्रोडक्ट सीनियर, उसमें चला गया. फिर वहाँ वर्क किया 2-3 years. Then I got a hint of UxHack, and then I dabbled. Then I jumped into this. So that has been my journey. UxHack क्यों start हुआ? So obviously this is more about, you know, I don't want to go into much technical. So yeah, see, after MBA कर लेते ना, जब मैंने 2010 में किया था, that time it was still, you know, startup was ऐसा मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था, राइट, कि हाँ स्टार्टअप, यू नो, फ्लिपकार्ट था, 2-3 थे, यू नो, मीडिया में नाम आना चालू हुआ था, बट स्टिल it was not considered as a career option, कि हाँ स्टार्टअप में जॉब करो, right?
सो बट यार ये भी था कि हाँ चलो अपना खुद का कुछ ट्राई करते हैं, फ्रेंड्स हम लोग बात करते थे MBA वाले, यू नो, पर कभी कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, नथिंग स्टाइल, यू नो, कि बस हाँ बात करके ही रह जाते हैं। आई थिंक लॉट ऑफ देम, यू नो, वी कीप ऑन डूइंग इट, है ना। तो बट जब मैं खुद स्टार्टअप में जॉब किया, तब आई थिंक आई गॉट मोर कॉन्फिडेंस, यू नो, क्योंकि उसमें और फ्रीडम मिली, राइट। आपने ऑपरेशंस देखा, आप कोई मल्टीपल हैट्स डॉन किए। था मैं प्रोडक्ट मैनेजर, बट यू वर डेवलिंग विद, यू नो, फाइनेंस, खुद का क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर रहे थे ऑफिस के, फिर उसको रिइंबर्समेंट में बिल में डालते थे, राइट। सो लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, यू वर वेरी स्क्रैपी, यू नो, वी वर ट्राइंग टू बी स्क्रैपी डिस्पाइट बीइंग फंडेड। तो बड़ा आइडिया लगा, राइट। तो फिर उसके बाद देन फिर और कॉन्फिडेंस है कि चलो आइडिया करते हैं। देन आई वाज मोर यार चलो क्या कुछ आइडिया, लेट्स ट्राई, ठीक है। तो आई रिमेम्बर कि मेरे MBA के फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक ट्रक लॉजिस्टिक्स का कुछ आइडिया था, इफ यू नो। ट्रक लॉजिस्टिक्स एक आजकल बहुत फंडेड कंपनीज हैं, जिसमें जितना भी अनऑर्गेनाइज्ड ट्रकिंग इंडस्ट्री है ना इंडिया में, कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B ट्रांसपोर्ट कराना है कुछ, स्टिल 80% इज अनऑर्गेनाइज्ड, राइट, दैट वे। सो अगर मैं उसको, तो उबर फॉर ट्रकर्स काफी निकले थे उस टाइम, राइट, कि आप ट्रक को ऑन डिमांड करो और डोमेस्टिक कमर्शियल, एंड वो ट्रैक कर सकते हो, वो कर सकते हो। आई थिंक ऐसे अब काफी आ गए। तो उस टाइम एक वो आइडिया था, राइट, एक हम लोगों ने, यू नो, मजे मजे में एक मेरे फ्रेंड का आइडिया था, वी थॉट चलो करते हैं, एंड मजा आएगा। या एंड फिर क्या हुआ कि बट देन फिर क्या हुआ कि मेरे को ट्रकर से बात करनी थी, बिकॉज आपको ऑब्वियसली दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ ट्रकर्स, राइट। फिर जब मैंने ट्रकर से बात करना चालू किया, देन आई रियलाइज यार दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। व्हाई? बिकॉज होता ना कि आप वेवलेंथ नहीं मैच कर पा रहे थे। आई वाज डिजिटली सेवी, एक मेरा अलग पर्सोना था, यू नो, अलग लाइफस्टाइल था। मैं उनके पेन पॉइंट से चाह कर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, राइट। तो देन मैं ऑनेस्टली आई थिंक 3-4 कॉल किए होंगे, 5 कॉल, तब आई रियलाइज, मैंने बोला यार शायद ये आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू दैट पेन। मैंने कहा आइडिया अच्छा है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, यू नो, अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करते हैं, पर द पॉइंट इज अगर मैं उससे अटैच नहीं हूँ, पैशनेट नहीं हूँ हो पा रहा, तो आई कांट रियली सस्टेन। तो वहां से फिर वो लर्निंग मिली यार, फिर मुझे लर्निंग मिली अगर इफ आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माय ओन, इट हैज टू बी समथिंग व्हिच आई कनेक्ट डीपली विद इट, यू नो, कि वो दैट पेन पॉइंट आई हैव टू रियली कनेक्ट विद, फील किया होगा तभी मैं उसे कर पाऊंगा। एंड लकीली तभी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कि, यू नो, आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर अ जॉब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आफ्टर स्टार्टअप, कुछ, यू नो, जैसे होता है नॉर्मली, आई वाज ट्राइंग टू लुक। देन आई रियलाइज कि यार अभी भी CV इज व्हाट आई हैव टू अपलोड एवरीवेयर, यू नो, एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। एंड आई न्यू अबाउट दिस लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो कोडर्स के लिए होते हैं, क्योंकि मैं खुद जब रिक्रूट करता था, सो गिटहब देख लिया उनका, गिटहब एक अच्छा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। हैकर अर्थ में देख लिया उनको, यू नो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यू कैन रियली टेस्ट एन इंजीनियर्स के लिए उसका रेपुटेशन क्या है। बट देन आई रियलाइज यार ऐसा प्रोडक्ट मैनेजर या डिजाइनर्स के लिए उतना क्यों नहीं मिला मुझे, यू नो। एंड दैट इज देन आई फेल्ट डीपली विद यार कि अल्टीमेटली दिस इज आल्सो in a way digital skills, right, if I say, right, more 90% of the product management जो jobs हैं, it is for digital products, and obviously design जो UX कहते हैं वो भी digital, right. So I thought yeah, this is an interesting white space. मतलब I really felt yeah, there has to be some platform, you know, यहाँ पे यार I can solve micro challenges, I can build my reputation, and I can get projects there, right. I can, या कोई कंपनी मेरे को उस प्रोफाइल के थ्रू हायर करे। I don't want to really float CV everywhere, right? एक digital persona होना चाहिए, and that's how that journey started, right, of UxHack. And yeah, here we are, and it's been 6 years almost. How was the journey? So full time I will say 5 years. Yeah, we just crossed 5. Journey I will say it's still roller coaster. कभी ups होते हैं, कभी down होता है, but yeah, मजा आता है, you know. जो एज आई सेड ना, अगर मैं देयर इज अ एम, जो ने विजन लिया हुआ है कि यार क्या करना है हमें, तो उसी से वी आर लाइक कनेक्टेड, यू नो। एंड जो भी रोड ब्लॉक्स आते हैं, सो बट वी आर एबल टू सस्टेन, एंड थैंकफुली हियर आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन, आई स्टार्टेड दिस अलोन, बट आई थिंक आई वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन अगर मेरे पास एक को-फाउंडर नहीं होता। okay, so for first 1 year I did it this alone, but
I knew कि I needed a co-founder, because there are challenges. Heads off जो अकेले इसको चला पाते हैं, at a founder, obviously employees तो आप ले आते हो, but at a founder level, those who are really able to born big, heads off. Like अगर शायद अक्षय नहीं आता, then probably I would have lost team. मैं शायद बंद हो जाती. Okay, wow, Right. wonderful. So for our listeners, can you explain in a line or two like what UxHack is exactly? So okay, so it's a platform for product and design aspirants and professionals to improve their skills as well as build their reputation, and get projects and company jobs. So we are building a sort of 360-degree platform for product and design, skills. Okay, wonderful. So, Amazing. So be it for individual, if anything you want related to design or product management, UxHack is the place. For companies, if you need anything related to product and design, be it talent, be it improving your product, be finding freelancers, anything, UxHack is the place. Wonderful. So before this, you mentioned you started something in Infosys as well. That was the truck logistics thing. No, वो अलग था. ट्रक लॉजिस्टिक्स तो बस आइडिया पे ही रह गया. उसके बाद रिफाइन नहीं हुआ. So Infosys, so I started. So as I said, 2006, 2008, that was my first experience, right, coding. So we used to develop CRM applications for Verizon call center. Okay. So if I have to basically बताऊं, CRM it's a software which is used by marketers, sales professionals and customer support agents to streamline their work, effective banana उसको, so that is the basic definition of CRM. So what we used to do for Verizon, जो customer support agents होते हैं, जो call पे customers हम बात करते हैं, right? हमें complaint लिखवानी है या कुछ भी करना है, so उनको क्या आपका प्रोफाइल दिखता है, कैसे वो मैनेज करते हैं. कभी-कभी आपको कॉल पे अगर आपने एक्सपीरियंस का ऑफर मिलता है कि अच्छा आपको हम ये दे रहे हैं, right? So that is the kind of application we used to build. Okay. For Verizon. So वहां से I will say वहां से एक बिजनेस साइड का ना एक्सपोजर मिलना चालू हुआ, राइट? मार्केटिंग, सेल्स, बिकॉज उनके लिए हम बना रहे थे, राइट? एंड सो इन्फोसिस में भी आई वर्कड ऑन द सेम थिंग, मतलब CRM स्पेस. बट वहां पे जो स्टार्टअप आइडिया था हमारा, वो ये था कि उस टाइम सोशल मीडिया आ रहा था, राइट? फेसबुक, ट्विटर, लॉट ऑफ यूजर ग्रोथ हो रही थी, राइट? 2010-11 में they were quite a chatter, right? And brands को लोग left and right used to, कोई भी complain, now they used to tag on Twitter, right? Yeah. Airways का, मेरा baggage loss हो गया, कुछ भी, lot of verticals, so now brands were dealing with this कि यार अभी तक तो सब hidden होता था, हमारे ही email पे या voice पे होता था, अब ये publicly होने लगा है. How do we handle this? So that is where the concept of social CRM came in. How you map this unstructured data to your existing CRM processes, right? So that is where we developed a proprietary solution within Infosys, and I was one of their product, you can say, designation consultant thing, but product management kind of role I did. And yeah, that was sort of you can say, because Infosys was pure services, right? Right. Infosys kabhi, I think apart from Finacle, I don't know whether you know about it. Finacle was the only banking एक product था जो Infosys का एक product था, which they can sell to multiple banks and implement there, right? Okay. But otherwise it was all services, कि requirement लो, estimate करो, and then build a multi-million deal track, But that time again was a journey. वो एक ऐसा टाइम था जब बहुत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. Everybody was saying कि services are getting commoditized, as you said, right? अभी चाहे तो IT सर्विसेज आप कोई भी खोल सकता है अगर you have the jobs, right? Right. तो उस टाइम Infosys was also struggling कि how do we now make more IP based, how do we productize our services, how do we build एक time effort डालो, multiple times we can sell that, right? So that is where again thankfully I was at the right place at the right time. Infosys was investing really into solutions, so Infosys labs and under काफी internal university, and that's how I got a chance,
to become a part of it. And again, so यहाँ पे मैंने वो रिस्क लिया कि so one opportunity for me was कि वो एक traditional client project ले लो, काम करके abroad चले जाओ, I can get a H1B visa and all. But उसमें वही I realized कि नहीं यार इसमें ठीक है, monetary gain absolutely right, set बाहर जाने का exposure absolutely, but the day to day जो मजा है ना वो नहीं. So that's why I took this risk यार Infosys में, let me do the startup. So would you say this was the pivotal point in your life where you decided like यार ये entrepreneurship में मजा आता है, यही करना है अपने को आगे जाके? Absolutely. This was yes. the pivotal. Yes. Definitely. Okay, so UxHack के starting days में how were the initial days जब आप अकेले काम कर रहे थे for the whole 1 year, like how did you manage your time, work life balance, and how was the product initially, and how were the initial days? Okay, so before jumping into full time, I got an opportunity with my previous company to work as a consultant for them. So I think वहाँ से और trigger मिला because so I used to work for like 2 days का मेरे को per week का उनके साथ commitment था, 3 days were free that way, कि आप कुछ भी करो. So it was a consultant billing था, and it was fine, decent money I was making a month without any job contract or other thing. Right. So that time then इस idea पे I refined and started working. So I will say initial 6 months was sort of a part time जहाँ पे I didn't have to worry really about कि कैश कहाँ से आई एम मेकिंग मनी कहाँ से बन रहा है. एंड ऑब्वियसली इट वाज मतलब एक्सपीरियंस भी हो गया था तो सेविंग्स भी थी, सो इट वाज कैलकुलेटेड रिस्क आई टुक. एंड या द चैलेंजेस चैलेंजेस वर लाइक कि सब चीज अपने आप ही कर रहा था इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा बिकॉज तब तक स्टिल आई यूज्ड टू हैव अ टीम राइट ऑफ इंजीनियर्स या फिर मार्केटिंग फाइनेंस, बट यहाँ पे ठीक है क्या करना है, चलो साइट बनाते हैं, क्या आइडिया है थोड़े अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म किया जो मेरा नेटवर्क था, बट फिर साइट खुद ही बनाई. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम आई मूव बैक टू कोडिंग. इट वाज अ डेलिबरेट डिसीजन बिकॉज जब मैं एज आई सेड आफ्टर एमबीए जब फंक्शनल साइड चला गया देन आई ऑब्वियसली कोडिंग वाज स्टॉप राइट दैट वे. मतलब टूल से खेलना इंजीनियरिंग के साथ आई यूज्ड टू डील, बट आई नेवर डिड कोडिंग आफ्टर माय एमबीए टिल द टाइम आई अगेन started my own company, right? But इतना then I realized कि after because products ultimately I was dealing with technical teams, right? I realized कि coding is a fundamental skill आज के टाइम पे. मतलब if you are into जैसे कि technical background, engineering है या digital तो सभी जगह हो गया, right? Now तो it has boom brand. I think if you know coding, it is a lifesaver. It's a life skill that way. I will tell you, right? So that's why I took a call कि यार मुझे let me again go back to coding, थोड़ा मैं try तो करूँ, मतलब वापस मैं because I never hated it, but इतना out of touch हो गया था तो I thought कि यार let me again gain some momentum because I was very clear कि यार अगर मुझे अपना बनाना है I don't have उतना luxury to spend money to get good engineers and all. So this is my playground, my startup is my playground and let me try to do it. So initially वो खुद ही का कोड किया and I'm more good at backend, I'm more good at कहते हैं ना database and the backend logics and all. That is where I'm more good at, not the front end part of it, design हो गया या front end जो होता है. So उधर I started taking help with freelancers. Okay. Upwork से ढूंढा, कहीं से ढूंढा, and एक basic shape दे दिया of my startup. And then I फिर फिगर आउट किया कि अच्छा कहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, बिकॉज माय आइडिया इफ यू सी इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, इट इज ग्लोबल, दैट वे, बिकॉज प्रोडक्ट एंड डिजाइन स्किल्स आर इक्वली रेलेवेंट इन इंडिया, इक्वली रेलेवेंट इन यूएस, एवरीवेयर, राइट? सो देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अच्छा मैं कहाँ पे थोड़ा पेज बना लिया. एंड सिंस आई वाज मेकिंग अ मोर ऑफ अ इफ यू सी टू साइडेड प्लेस, आई नीडेड कम्युनिटी, यूजर्स एंड अ बिजनेस साइड, राइट? So जो इनिशियल आइडिया था, अभी तो जो मैंने आपको बोला हैकाथन प्लेटफॉर्म, इनिशियल आइडिया वाज वेरी सिंपल दैट वे, मतलब इसी का एक चंक था कि बिजनेसेस आए और अपनी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पोस्ट करें, स्मॉल माइक्रो प्रॉब्लम, जैसे होता है ना कि आपने साइट निकाली अभी
Right. तो यार इस साइट पे यू नीड वेरी कंस्ट्रक्टिव टू द पॉइंट फीडबैक, नॉट यूजर बट होता है ना माइक्रो कंसल्टिंग, कि अगर मैं एक प्रोडक्ट प्रोफेशनल हूँ नाउ, अगर मैं कोई साइट या ऐप देखता हूँ, एक एंगल होता है मैं यूजर की तरफ से देखूं, बट सिंस आई एम अ प्रोफेशनल आई कैन गो मोर डीपर इनटू इट, आई कैन से कि यार आप ये करो, यू नो हमने ये किया था, दिस वर्क, यू नो you should try this, something a very quick growth hack, micro consulting. So that was my initial initial basic idea कि एक तरफ community होगी जिनको मजा आता है प्रोडक्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आइदर डिजाइन हो गया, ये सब एक ही पार्ट होता है, राइट? कॉपी हो गया, माइक्रो कॉपी, साइट की हेडलाइन क्लिक करके दिखाओ, ये करो, एंड दूसरी साइड कंपनीज होंगी जो वो प्रॉब्लम पोस्ट करेंगी और जो आपको अच्छा लगे उसको रिवॉर्ड दो, मॉनेटरी या जो भी। सो वो था बेसिक। सो नाउ उसके लिए अब मैं कैसे स्टार्ट करता, मैंने साइट तो बना ली। सो आई फर्स्ट थॉट कि आई डोंट नीडेड इट टू बी पब्लिकली ओपन, कि कोई भी आके जान के ले। आई न्यू कि आई गेट देयर प्रोफाइल, राइट? अल्टीमेटली आई डोंट वांट यूजर्स, मुझे एक प्रोफेशनल चाहिए जो अच्छा हो, मेरे को दिख जाए उसके लिंक्डइन के हिसाब से यार कि वो सही है, हाउ गुड ही इज, राइट? हाँ, राइट, समथिंग व्हिच गिव मी अ बेसिक आइडिया कि हाँ यार एक बेसिक क्वालिटी क्राइटेरिया मीट हो रहा है। तो ये फीडबैक जो भी देगा, जो भी कंपनीज को देगा, विल नॉट बी नॉइस, या ऐसा नहीं कि गार्बेज होगा, राइट? सो मैंने जब इसे लॉन्च किया था, आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट कहाँ लॉन्च करूं। तो देयर आर साइट्स, इफ यू नो वर्ल्ड वाइड देयर आर बीटा साइट्स, कहते हैं उसे बीटा प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ पे आप अपनी स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो टू गेट यूजर्स। ओके, सो देयर बीटा पेज करके एक साइट है, अभी तो प्रोडक्ट हंट भी आ गई, प्रोडक्ट हंट तो बाद में आई है, राइट? बट देयर आर, इफ यू सर्च बीटा साइट्स वेयर आई कैन लॉन्च, तो बहुत सारी आती है, लॉन्चिंग नेक्स्ट, बीटा पेज, बीटा लिस्ट, देयर आर मेनी मल्टीपल ग्लोबल प्लेटफॉर्म। एंड बाद में मुझे पता चला 2-3 तो ऐसी साइट है जो इंडिया में है, ये चलती हैं, बट दे आर वेरी ग्लोबल इन नेचर। Okay. So this is how you got your initial first customers, first 100 users. Correct. Right. And right. So please go ahead. Yeah. So as I said कि मैंने उसे invite based रखा था. So I got their invite, मतलब उनका email आता था, वो आता था. Then उनका LinkedIn profile I used to ask. And तब उससे मुझे पता चलता था how good they are. And then I used to accept them. ठीक है, तो ये तो हो गया इनिशियल हाउ आई क्रिएटेड द यूजर बेस। सिमिलरली फॉर बीटा में मैंने प्रोडक्ट कंपनीज भी, जो बेसिक स्टार्टअप्स होती है ना, जिनको फीडबैक चाहिए होता है फ्री में, आई स्टार्टेड टारगेटिंग देम कि चलो उनको 3 फीडबैक फ्री में देते हैं एंड देन सी हाउ इट गोस, राइट? तो वहां से मैंने इनिशियल जो स्टार्टअप्स भी आई थी जो अपने प्रॉब्लम्स डाले, वो भी मैंने वहीं से ही सोर्स की। ओके, राइट? सो दोनों वहीं से ही सोर्स हुई, एंड वहां से फिर हुआ कि एक बार बीटा, हाउ बीटा डज इज कि इनिशियली तो आपको थोड़ा मिल जाता है विजिबिलिटी बेस्ड ऑन द, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द रीच ऑफ द साइट आल्सो, वो कितना बड़ा है। सो इनिशियल रीच के बाद देन आई सेड यार इसको अब मैं हाउ डू आई मेक रिकरिंग, मतलब कैसे मैं आई कीप ऑन कि मंथ ऑन मंथ ये ग्रो होता रहे। तो देन आई गॉट एन आइडिया कि इसका एक हैकेथन करते हैं, सो जनरली वो भी एक आई थिंक आई विल से आउट ऑफ द बॉक्स था, बिकॉज स्टार्टअप्स कभी ना हैकेथन्स करते नहीं है। इफ यू सी, आप हैकेथन सर्च करो, इट्स ऑलवेज बिग बैंक्स एंड बिग बजट्स, राइट? कि 5 लाख 10 लाख रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, बिकॉज वो एक अलग एंगल में सोचते हैं। दे आर लाइक उनको डेवलपर्स से एमवीपी कराना होता है उसी टाइम 24 आवर। बट मेरा आइडिया ऑफ हैकेथन वाज मोर अबाउट मार्केटिंग हैकेथन, कि मैं मेरी साइट पे लोग आए, ज्वाइन हो, तो मेरा वो टाइप का आइडिया था, ठीक है? तो so उसके लिए how do I get, so first of all since it was a platform, so मेरे होस्टिंग चार्जेस लग रहे थे AWS पे, राइट? तो मेरे दिमाग में फर्स्ट था कि यार how do I save this cost, बिकॉज अभी तो मैं रेवेन्यू नहीं कर रहा, how do I save this AWS का जो होता है ना टेक्निकल होस्टिंग का कॉस्ट जो मंथली जा रहा है, या तो फिर NASSCOM, if you know, there is a program of NASSCOM called NASSCOM 10,000 Startup Program. Right. So ये मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि I can apply for them. तो मैंने उसके नोएडा वेयर हाउस, आई एम बेस्ड आउट नोएडा, तो मैंने नोएडा वेयर हाउस के लिए उनके लिए अप्लाई कर दिया। ओनली रीजन फॉर मी वाज कि वो इक्विटी नहीं ले रहे थे, ठीक है? बट NASSCOM का ब्रांडिंग था, ऑब्वियसली NASSCOM इज नॉट फॉर प्रॉफिट गवर्नमेंट प्रोग्राम, and but they were giving lot of AWS के credits,
यू नो सो मेरा मोटिवेशन वही था कि यार इफ आई एम एबल टू गेट हियर तो मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को क्रेडिट्स मिल जाएंगे एंड आई विल बी एबल टू सेव माय रनिंग कॉस्ट, है ना। तो थैंकफुली वो कुछ स्टीयरिंग कमेटी हुई, क्लियरेंस हो गया, सो आई वाज UxHack गॉट April 2017 में we got incubated, you know, and that gave me I think lot of boost. एक तो कॉन्फिडेंस आता है राइट कि आपने क्योंकि आपने स्टीयरिंग कमेटी में पिच किया, 2 लेवल्स हुए, तो एक आई होता है वैलिडेट किया लोगों ने, आइडिया एक वैलिडेट किया, जो ठीक है फंडिंग का वैलिडेशन नहीं था वो, ये बिकॉज दैट वाज नेवर माय गोल, बट एक क्योंकि एक CXO लेवल को मैंने पिच किया, उन्होंने समझा कि हाँ ये ठीक है, उन्होंने फीडबैक भी दिया राइट कि हाँ आइडिया तो अच्छा है आपका, हाउ यू प्लान टू मेक मनी है वो सब पूछा, बट या फाइनली आई गॉट द होल्ड ऑफ इट एंड so that is where I went here in full time. 2017 April is where मैंने कहा चलो अब इसको सीरियस, now I have to really क्योंकि मेरे पास टाइम है, क्रेडिट्स मिल गए, so there is no एक होता ना कि एक टेंशन नहीं कि यार मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा ऑफ बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। हाँ, बिकॉज सैलरी तो ठीक है, वो तो मान के चला था कि ठीक है अभी नहीं निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, so that I was fine with, right? But monthly business expense, yeah, that I should take care, right? So that was, तो वो हो गया, and then yeah वहाँ पे फिर yeah थोड़ी visibility मिली because NASSCOM helped me in relevant events में जाके showcase किया UxHack को, right? And तो वहाँ से थोड़ा step awareness चालू हुई, फिर hackathon का भी वहीं से since I started full time, तो मैंने कहा hackathon इसको कैसे किया जाए, so I thought कि where किसी के साथ मैं co-branding कर सकता हूँ जहाँ पे I can get startups, because I need startups on my platform to pose their problems. So I thought कि then I realized कि co-working is the best bet, कि co-working में सब startups होते हैं mainly, right? So that is how so I pitched to Unbox Co-working, एक startup, co-working company है in Noida. I pitched to them कि आप मेरे साथ tie up करो and and this is my platform and online hackathon रहेगा, we'll have 5 companies who put their problems, कम्युनिटी मैं बनाऊंगा, मतलब यूजर्स मैं लेके आऊंगा, आप बस स्टार्टअप को ये रीच कराओ, डिस्ट्रीब्यूट कराओ, ताकि स्टार्टअप्स को प्रॉब्लम पोस्ट कर पाए वो, सो समहाउ दे एग्रीड, आई थिंक आई वेरी, मतलब उनको लगा कि ठीक है, इट्स फेयर इनफ, कहते कि क्योंकि उनका कुछ एफर्ट था नहीं, मतलब आई सेड कि आप जस्ट अपना मुझे डिस्ट्रीब्यूशन दो, रीच जो आपकी स्टार्टअप्स हैं जो भी है, so that is how we started with our first online hackathon, and community के लिए फिर what I did was I went to upgrade. Okay. So upgrade उस टाइम प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कराती थी, अभी भी कराती है, but that is what the starting point. They used to get people or professionals who want to become product managers, so do a course and उनको पूरा frameworks, theory पूरा पढ़ाते थे वो, right? And so I thought that this एक basic quality check वहाँ से मेरे को मिल जाएगा, right? Because so if upgrade का वो course already कर चुके हैं या कर रहे हैं, so they at least know basics of products, right? Basic of product management. And I said कि this is what I'm doing. And उनको pitch मैंने ये बोला कि एक तो upgrade का नाम आ जाएगा, exposure, right? And उल्टा they will be able to work on real product problems, उनको actual product problems को solve, हाँ. And if और अगर आपके students जीतते हैं, let's say they won something, तो आपका ही obviously credibility बढ़ेगा, right? That's it. So they also agreed. So that is how it started, and yeah, it was I will say that was one of my biggest achievement, because individually, from scratch, I convinced a lot of partners to come along, build a landing page, and BW Disrupt में it got also covered. So BW Business World का जो startup edition है, उसमें this event also got covered. Thanks to again one of my friend था, तो उसके through. But yeah, it was a very big, I was a decent success. काफी अच्छा visibility मिला. What 100 to 200 luck new played users a part in it? Luck. I was at the right place at the right time. What is luck? Luck. You build your own luck. Yeah, I think. See, I'm not thinking. See, luck होता है. I don't deny कि luck नहीं होता है. Luck होता है, but you need to try for that. अगर मैं बैठा रहता एक ही जगह, मतलब हैकेथन कैसे होता,
राइट राइट right? So कुछ नीडल आप मूव करते हो, then obviously I believe in stars कि हाँ मतलब हाँ हाँ राइट प्लेस एट द राइट टाइम पे था, वो आज स्टार्स अलाइन जो भी पार्टनर, so we work, it worked, right? Because ऐसे भी हुआ है, बाद में भी पिचेस किए हैं, but it never worked. सो So वही इवन होता टू है, yeah, गेट so द that way, आइडिया कि अपन कोवर्किंग स्पेस के साथ टाई अप करते हैं या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपग्रेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज लॉन्च कर रहा था एंड आपकी भी टाइमिंग सही थी, सो वुड यू बिलीव स्टार्स वेयर अलाइन्ड फॉर यू एंड दिस वाज द राइट टाइम एंड लाइक yeah, that way you can say कि it clicked, right? ऐसा भी हो सकता है it could have never clicked, right? कि मैं इनको बुला, but yeah, you are right, yeah. दिमाग में आया तो कहीं से आया, yeah, you are right that way. Amazing. This But was still, this was yeah, really insightful. I think मेरे दिमाग में भी कुछ आइडियाज आने लगे हैं how to connect the dots. So sure. so currently आप Yeah. users and startups को कैसे लाते हैं currently? So अब तो so I will say कि as I said initially हमारा simple सा premise था, right? कि feedback देना है, कंपनी छोटे प्रॉब्लम को पोस्ट करे, तो एक हैकाथन के बाद में 2 किया 3 किया, हैकाथन हम करते रहे। तो एक तो हमारा क्या है कि फिर हमारा परसेप्शन तो क्रिएट हो गया कि ये कंपनी ऐसी है जो प्रोडक्ट हैकाथन्स कराती है, Okay. तो ऑटोमेटिकली वो ना परसेप्शन बनना चालू हो गया। जैसे इफ यू सर्च फॉर जनरली हैकाथन्स आर मेनली फॉर इंजीनियर्स, फॉर डेवलपर्स, हाँ नॉट फॉर प्रोडक्ट मैनेजर्स, नॉट फॉर डिजाइनर्स। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है हैकाथन में आपका कोई काम नहीं होता, सिंपल है, जनरली यही होते हैं हैकाथन। बट हमने वो चेंज किया अपने लेवल पे, वी ट्राइड स्टार्ट चेंजिंग। It was not intentional because, as I said, I started hackathon as a marketing, purely as a marketing for our startup, right? But धीरे-धीरे जब वो पोजीशनिंग बनने लगी कि बाकी कोवर्किंग भी जैसे कि फोन करने लगे हैं मुझे कि आप हमारे साथ टाइप करो, लेट्स डू अ हैकाथन टुगेदर। तो मैंने कहा यार जब सामने से ब्रांड लोग आने जब लगे। बन रहा है ऐसा, हाँ, मैंने कहा यार हैकाथन एंड या वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज हैकाथन के जो बोल्ट्स होते हैं ना, नट्स एंड बोल्ट्स, कि हाउ डू यू रन दैट हैकाथन, लैंडिंग पेज हो, सबमिशंस हो, काउंटर हो, लीडर बोर्ड हो, वो सब आई बिल्ट इट ऑन माय प्लेटफॉर्म, राइट? सो उससे क्या है ना, एफिशिएंसीज बहुत आ गई, सो इट वाज वेरी इजी फॉर अस टू रन हैकाथन, राइट? ज्यादा हमें फिर मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ती थी, सो वी कुड क्विकली, सो उससे वी रियलाइज कि यार दिस कैन बी अ गुड यूज केस टू अट्रैक्ट कंपनीज, राइट? कि आप अपना खुद का हैकाथन करो हमारे साथ प्रोडक्ट। तो दैट इज हाउ आवर फर्स्ट ऑफरिंग केम इन, यार हैकाथन्स वी आर वी कैन डू अ प्रोडक्ट हैकाथन फॉर यू, एंड वो अभी भी एक ऑफरिंग हमारी लिस्टेड है। बट उसका लिमिट वो है कि एज आई सेड कि हैकाथन का एक परसेप्शन है, स्टार्टअप्स मतलब यू नीड टू एजुकेट देम कि यार कि आप खुद का भी हैकाथन कर सकते हो, you don't need big budgets, you don't really need big budgets, आप हैकाथन करो, अमेजन वाउचर्स दो। मैंने कहा कि आपको अल्टीमेटली इट शुड कनेक्ट टू योर टारगेट ऑडियंस, दैट्स व्हाट आई जनरली टेल, राइट? कि या अगर आपको कोडर्स टारगेट करने हैं, लेट्स से, देन ऑब्वियसली वी आर नॉट द प्लेस, तब आपको वो कोडर्स वाले प्लेटफॉर्म टारगेट करने पड़ेंगे। बट इफ यू वांट टू टारगेट डिजाइन प्रोफेशनल्स, बट एज जो आपके यूजर भी बन सके, राइट? या प्रोडक्ट प्रोफेशनल जो आपके यूजर्स भी बन सके, वी आर अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू दैट वे, एंड दे विल बी हैप्पी टू गिव, मतलब आप उन्हें मतलब ठीक है डिसेंट दे दो मनी, ऐसा नहीं कि डिसेंट दे दो, पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बिग बजट होना चाहिए, राइट? सो दैट इज हाउ वी स्टार्ट पिचिंग इट, एंड बट हमारा फिर एक पाइवट पॉइंट आया, व्हाट वाज सेइंग, राइट? सो मतलब फिर हमने व्हाट वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार फीडबैक के लिए ना कोई पैसा नहीं दे रहा था स्टार्टअप्स, उनको जो फीडबैक मिलता था दैट वाज अ गुड एक्शनेबल फीडबैक, दे यूज्ड टू से कि हाँ वेरी नाइस, बट व्हेन वी से कि ठीक है वुड यू लाइक टू पे फॉर इट नाउ, तो दे वर लाइक नहीं मतलब वो समझ आ गया था कि वो कोई पैसा नहीं दे रहा इसके लिए। सो देन वी रियलाइज, तो तब हमें समझा कि जो होता है ना, जो क्लोज कनेक्शंस होते हैं, क्लोज स्टार्टअप फाउंडर्स थे जिनके साथ रिलेशनशिप पूरी बनी थी, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि निशित ये बोले कि देखो अगर आप हमें इम्प्लीमेंट या हमें एग्जीक्यूशन लेवल तक लेके नहीं जाओगे, उसे आउटपुट नहीं दोगे, तब तक वो हमारे उतने काम का नहीं है। जैसे कि यार फीडबैक तो बहुत मिल जाते हैं,
यूजर से भी मिलता है, सेल्स टीम भी हमें देती है, आप लोग भी अगर दोगे। मैंने कहा पर फिर वो क्या होगा, वो एक हमारा बैकलॉग में चलता रहेगा। राइट। तो बोले कि अगर तुम्हें इसका रियली वैल्यू करना है, कहते हैं कि यार अगर तुम यही मुझे एक लेट्स से फिग्मा का आउटपुट दे दो डिजाइन कि ये लो आपका ये था और मैं ये करके दे दिया है, देन फॉर अस इट इज ऑफ वैल्यू, क्योंकि तब मैं क्या है कि उसे डायरेक्ट इवैल्यूएट कर सकता हूँ कि अच्छा ये तो इसने करके दे दिया था, राइट। तो देन वी स्टार्टेड फर्दर अपिंग आवर गेम। ओके। तब हमारा वैल्यू एड फिर क्या है कि नाउ इट इज नॉट मोर एट आइडिएशन लेवल कि यार बस आपने किसने फीडबैक टेक्सचुअल फीडबैक दिया हो गया काम। देन वी स्टार्टेड एडिंग मोर वैल्यू कि यार अरे नाउ वी नीड पीपल टू रियली आइदर स्क्रीन बनाओ फिग्मा पे या एनोटेट करो, प्रॉपर उसे दिखाओ विजुअली कि व्हाट इज इट, हाउ योर साइट वी कैन इम्प्रूव या हाउ योर प्रोडक्ट कैन बी इम्प्रूव। बट वहां पे फिर देन वी हिट अ रोड ब्लॉक कि तब उसके लिए वी नीड मच मच बेटर क्वालिटी टैलेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। राइट। तब तक जो हमारे पास टैलेंट था वो ठीक है, टेक्सचुअल फीडबैक वो फीडबैक था, बट नाउ वी नीड रियली जिनको अपना ना दे वर एक्चुअली इन द गेम, वो इन एंड आउट प्रोडक्ट पे खेलते हैं, बनाते हैं, खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं, तो डिजाइनर्स हैं, एक्चुअल डिजाइनर्स हैं। सो देन तब हमारे एडटेक वाला पीस स्टार्ट हुआ, एज एन यार वी रियलाइज कि देयर इज अ गैप, वेल वी कैन गेट यूजर्स बट हाउ डू वी रियली फिल्टर कि कौन अच्छा टैलेंट है कौन नहीं है। देन हमने कहा यार कि उसके लिए देन वी स्टार्टेड डूइंग अ लर्निंग हैकाथन करके कांसेप्ट एंड वीकली चैलेंजेस। सो वो क्या था, दैट वाज द आइडिया कि वी स्टार्टेड बिकॉज मी एंड माय को-फाउंडर हमको मजा आता है प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने में, राइट। दैट वाज आवर एक्चुअली दैट इज हाउ ब्रेड एंड बटर दैट वे, राइट। सो जब भी हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट दिखता है, या नेटफ्लिक्स में ये इशू है या नेटफ्लिक्स ने ऐसे कुछ फीचर लॉन्च किया है, उसने पीआर किया, हमने उसको देखा, हमने कहा यार इसको इंप्रूव किया जा सकता है, तो हम लोगों ने क्या किया कि देन वी स्टार्टेड पिकिंग दिस पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो चल रहे हैं, जो ऑलरेडी यूजर्स को पता है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, व्हाट्सएप हो गया। वी स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट, प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स, एंड उसके अराउंड हमने फिर कम्युनिटी को बुलाना चालू किया कि कम ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सॉल्व दिस प्रोडक्ट प्रॉब्लम, है मॉक प्रॉब्लम बट वेरी रियल वर्ल्ड, कि जो आपको एक्चुअली जाके एक्सप्लोर करना होगा, एंड यू विल बी जज्ड, यू विल गेट अ स्कोर कार्ड, अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे। तो वी स्टार्टेड प्लेइंग ऑन दैट। तो उसमें एक लर्निंग एंगल भी था और एक हैकाथन एंगल भी था, अचीवमेंट वाला, राइट। सो दैट अट्रैक्टेड, आई थिंक दैट गेव अस अ वेरी वेरी बिग बूस्ट, बिकॉज उससे ना तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी आने लगे, प्रोफेशनल्स भी आने लगे, बिकॉज प्रोफेशनल्स के लिए मोटिवेशन ये था कि यार हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, हाँ हम अभी तो जो काम कर रहे हैं पर हमें यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिल रहा है, एक अलग प्रॉब्लम पे काम करने का मौका मिल रहा है, राइट। एंड एक्सपीरियंस के लिए मोटिवेशन हुई था कि उनको फीडबैक मिल रहा है पोर्टफोलियो, राइट, बिकॉज सब जगह पोर्टफोलियो मांगते हैं, राइट। सो दिस वीकली चैलेंजेस एंड लर्निंग हैकाथन्स वेयर आई विल से आर एक्चुअल वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड फॉर यूजर्स। हमारा कंटेंट बनने लगा, केस स्टडीज आने लगी, मतलब सब चीज अपने। सो यूजर साइड आई थिंक वी क्रैक्ड इट। ऑर्गेनिक एसईओ भी हमारा इंप्रूव हो गया ऑटोमेटिकली। यूएक्स अब जो जीतता है, फॉर एग्जांपल उसको अच्छा लगा तो एज यू हैव सेड, राइट, तो वो स्प्रेड होने लगा वर्ड ऑफ माउथ ऑटोमेटिकली, कि उसने 5 लोगों को अपने फ्रेंड को बताया क्या, तो इस प्लेटफॉर्म पे तुम ज्वाइन करो, ये लोग हैकाथन करते हैं, प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स करते हैं, तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें सीखने को भी मिलेगा और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी बनेगा, राइट। तो हमने धीरे धीरे देखा अपने आप ही फिर यूजर्स बढ़ने लगे, एंड ऑर्गेनिकली नाउ वी आर इन अ शेप कि हम लोग को अगर हम इवेंट नहीं कर रहे, अगर जैसे उस मंथ में कोई एक्टिविटी नहीं की, स्टिल वी गेट अराउंड इजीली 300 साइन अप्स, 200 to 300 साइन अप्स। सो करेंटली आप लोग कोई टूल्स यूज करते हैं, ऑनलाइन टूल्स, टू गेट दीज स्टार्टअप्स और दीज यूजर्स? टूल्स नहीं, सो गूगल एसईओ इज आई विल से द फर्स्ट एसईओ पे वी वर्क अ लॉट फॉर लास्ट 1.5 year we have been focusing on that a lot, because ये हमारे, so obviously we use Google Analytics and Heap to track कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से convert हो रहे हैं, correct? So we realized कि before even we focused on SEO, our SEO was decently enough, decently it was performing. Then we started putting more energy on that, यार इसमें और कैसे हम better करें. So now अगर if you see, अगर आप Netflix है,
So अगर आप Netflix UX केस स्टडी डालोगे तो हमारा ऊपर आएगा, Okay. या आप डालोगे Zomato UX केस स्टडी तो हमारा ऊपर आएगा. So that is how we started working on with the brand name, right? And that is how we started. So SEO is one of the things we do. Right. उसके लिए tool as in analytics होता है, Google Analytics. Keep is one much more advanced than Google. So that we use to track. तो उससे you get to know कि कौन से channels आपके perform कर रहे हैं, right? And बाकी यहाँ हमारा कुछ ऑर्गेनिक मार्केटिंग अभी से रहता है is on LinkedIn, right? LinkedIn से हमें मिल जाते हैं यूजर्स काफी. And surprisingly, on our initial dates, not a growth hack, but I used to post a lot of Quora answers. Quora पे काफी आंसर्स डालता था, and उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स आए. Yeah, in 2016, back in those days, Yeah. Quora was a big hit. Yeah. हर कोई छोटा बच्चा भी Quora चला रहा था. Right. Even we were So Quora obsessed with Quora answers. So Quora से काफी, and not only India based, I used to get a lot of US and उस टाइप के लोग भी आके sign up करते थे platform. Amazing. And अभी उसका क्योंकि अभी obviously activity एक तो कम हो गई है, because now I think Quora थोड़ा noise हो गया है. बट अभी भी आई विल से अगर मंथली अगर बोलो तो 5 से 10 तो आते होंगे, 5 तो आते होंगे मिनिमम Quora से. Okay. Now coming to some personal questions, Nishith. As a startup founder, you said you have to wear multiple hats, right? So currently, what all hats are you wearing in your organization currently? Okay, so currently I am completely technical, so CTO नहीं हम लोग, so we never मैंने अक्षय ने हम दोनों ने भी डेजिग्नेशन नहीं दिए. We are both co-founders, ठीक है, because अभी और कोई टीम नहीं है, to be very honest, right? अच्छा. और नहीं हमने कोई कंपनी रजिस्टर्ड की है, मतलब we are not a private limited. और ये पता है कोई फीडबैक देता नहीं है रियल में ना, nobody gives this feedback कि आपको अभी we are proprietorship, GST है, but it's a proprietorship. Okay. ठीक है, because we are bootstrap, that is also one of the, अगर if you want to raise funding, you have to go private limited, but अगर आपको bootstrap रखना है, then जितना proprietorship पे रख सकते हो better है. So आपके कुछ plans हैं future में funding के? So we want to follow, we both like how Zerodha evolved या Zoho, so अगर हम वैसे चला पाए तो nothing like, so yeah, plans नहीं हमारे. But obviously you होता है ना कि never say never, but yeah, there are no plans. We actively want to raise funds, right? Coming back, so what I do, I manage completely tech, front end, back end, the coding part. I manage the finance, the booking, accounting, GST file करना, that I do. और then जो भी क्या कहते हैं administrative works होते हैं, because it's proprietorship under my name, so that I have to take care. Okay. And jointly sales we do jointly. Okay. Because that is a shared, I think that is a shared responsibility, ऐसा नहीं कि एक specific है. And then the tools को connect करना, the tools part, right? कि कौन से tools हमको अपने platform के लिए use करने हैं, business के लिए use करने हैं, so that generally I take care of again. Okay. Right. And my co-founder is into design, so product का जो platform का जो design है, UI है, या the testing, तो वो होता है ना, because I code deploy करता हूँ तो आप खुद का टेस्ट उतना इफेक्टिव नहीं कर पाओगे जो कोई दूसरा करेगा, right? So वो हो जाता है. Then he is good at copy, तो social media generally he do जो official posts होते हैं. Okay. Publicly, first individually we do our own, but जो UxHack channel से जाता है generally he does, right? And बाकी जो design studio जो services वाला design projects को handle manage, so my co-founder does it. Okay. Okay. Yeah. Okay. So, according to you, what is the definition of success? Is it money, fame, time? What would you say? Definition of success? Yeah. So I would say, I think I would say it's relative, to be very honest. मेरे लिए क्या मैं वो बता सकता हूँ, not for others. Yeah, for your definition. Right. So for me, it is ability to say no. When I will reach a stage where जो चीज मुझे नहीं करनी या नहीं अच्छी लगे, मैं उसको मना कर पाऊँ.
whether it is personal, profession, anything. When I reach at that stage, I think that is when you are really, then I would say is a success, right? तो कहीं पे वो मनी वाला पार्ट आएगा कि इफ यू हैव इनफ मनी आप अपॉर्चुनिटीज को मना कर पाओगे, राइट? अरे नहीं करना, बहुत टाइम जाएगा, नो, देन यू आर मॉनेटरीली सक्सेसफुल, राइट? फर्स्ट कि अगर मुझे हमें ट्रिप प्लान करना है, लेट्स से मटेरियली, राइट? लेट्स से आज मन नहीं कर रहा काम करने का, कैन आई डू दैट? When I'm at that stage, then you are successful, right? So yeah, so I will say success is all about right to say no, without any मतलब आपके कोई obligation, कोई guilt ना हो. Wonderfully said. Right? Wonderfully said. Have you ever had any, I have done this, I have done it moments, like I've done it यार, आज तो फोड़ दिया, फाड़ दिया एकदम, something like that. Yeah. So yeah, I think moments आते हैं, as I said ना. So I think so one of the things, see, startup is obviously a lonely journey. मतलब co-founder भी हो जाए, ये तो co-founder होना ही चाहिए, but still it is very lonely journey, because job में क्या होता है कि आपको पैट ऑन द बैक मिलता रहता है, राइट? कुछ भी आपने कर दिया, छोटा सा ट्राइब रहती है, यहाँ पे आप अकेले कर रहे हैं सब कुछ. हाँ, कि मैनेजर ने बोल दिया हाँ यार निशित अच्छा वर्क, मेल पे पब्लिकली मैनेजर्स अपने हेड को बोल दिया कि हाँ निशित ने अच्छा किया, बट यहाँ पे यू नीड टू कहना कि यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग योर वेज ऑफ पैटिंग योर बैक, अपने आप ही करना पड़ता है, कह लो, पर वो करना पड़ता है कि खुद को आपका. सो हाउ डू वी फाइंड, एक तो होता है जब भी कोई अच्छा नया फीचर जाते हैं, राइट, या नया कुछ एज अ सेड इवेंट, एंड जब सब स्मूथ चल जाता है डिप्लॉयमेंट के बाद, एंड वी स्टार्ट सीइंग एनालिटिक्स में यार एक साथ 100 को हैंडल कर लिया, 200 को हैंडल हो गया. जो हॉटस्टार है ना, हॉटस्टार क्या अप्रिशिएट करता है, मिलियंस में खेलता है. हमारे लिए अभी अप्रिसिएशन होता है अच्छा 200 को हमने कर लिया, एक साथ चल रहा है, 500 चल रहा है, तो दैट इज अ गुड किक मिलती है. हाँ ठीक है कि हमारा कोड अच्छा है, इट्स दैट एट दिस लेवल इट्स डूइंग गुड, राइट? सो वो हमारे लिए, सो फॉर मी, बिकॉज देन इट्स, अगर वो नहीं चलेगा तो आई नो कि द ओनस इज ऑन मी, राइट? एंड बिकॉज अगर वो नहीं चला, so onus will come on me because I am accountable for that, right? So that is a personal achievement always then, right? कि अगर वो सही चला, फिर अक्षय फिर बोलता है यार हाँ सब स्मूथ चला है, कोई इशू नहीं आया, so obviously that's a big thing, right? Wonderful. So that is one. And obviously whenever we win, B2B में कोई भी कंपनी के साथ हम काम करते हैं, when they feel happy about it, right? या फिर कोई यूजर हमें अलग से लिंक्डइन पे कोई हमें टैग करके लगे, एज अ सेड व्हेन LH और वीकली किया जब करते हैं हम, सो लॉट ऑफ, सो इफ यू सी लिंक्डइन पे यूजर्स टैग मी एंड अक्षय, एंड दे अप्रिशिएट अस, तो वो अच्छा लगता है. या right, wonderful. Tell me something, what is one thing that people find it hard to believe about you? Hard to believe about me? Yeah, like निशित ये कर सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, something like that. Interesting. ऐसा किसने कभी, so I don't know whether मेरे लिए, so two parts है, right? एक, when people get amazed कि उनको लगता है UxHack एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, तो so this not individual, but हाँ कोई मुझे पूछता है, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, मेरा co-founder है, बस that's it, बस तुम दोनों ही, और कोई नहीं है, right? So वो एक रहता है, right? एक वो amazed, like people are always amazed, right? कि अच्छा मुझे तो लगा था बहुत बड़ी टीम होगी, right? So that is one. At an individual level, to be very honest, it's okay. कैसा भी एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि either people expect more. Probably अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, हाँ, let's say, so I'm not extrovert, मैं उतना extrovert नहीं हूँ, I'm not that gossip वाला, so my wife can will tell you better, right? She is the more talkative, I'm very less, so मैं काम से काम में मतलब रखता हूँ अपने. So कभी अगर मैं ऐसा वो कर दूं ना कि मैं expressions ना उतने जल्दी दिखाता नहीं, neither I show my angerness, neither I show कि बहुत खुश हूँ मैं, तो कभी अगर वो होता है ना, तो तब my wife क्या वो कहते हैं, क्या बात है आज तो बड़े खुश हो, because I generally keep my emotions in control. Okay, wonderful. So do you focus on your mental health? Do you do some activities for your mental health?
या मतलब पहले नहीं करता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले नहीं, बट लेटली आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग यस मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो जनरली सो व्हाट वी डू ना, तो जनरली लोग बोलते हैं कि यार यू नीड टू गिव 80 आवर्स अ वीक, आपका खुद का स्टार्टअप है, राइट? इनिशियली किया था स्ट्रगल, करने को अब भी कर सकते हैं, बट नाउ वी हैव मेड लाइक मी एंड अक्षय, हमको लगता है बर्नआउट नहीं होना है, बिकॉज ये एज तो हम लोग मैराथन खेल रहे हैं, राइट? इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, तो लेट्स नॉट गेट बर्न आउट। तो हम जनरली ट्राई करते हैं मंडे टू फ्राइडे इज वी वर्क, अनलेस इट कोई इवेंट आ रहा है, वी ट्राई टू सैटरडे संडे नहीं करते हैं काम, राइट? सो फॉर मी माय मेंटल पीस इज ट्राई टू डू दैट वर्क लाइफ बैलेंस, कि अपनी डॉटर के साथ खेला, यू नो, मतलब सो वी ट्राई टू शट ourselves down after let's say 7 p.m, right? And don't think much about work, so वो उससे मेंटल पीस होता है। when yeah then you walk or you know, वो उससे थोड़ा रहता है। and बाकी so I'm a foodie, so we go out and enjoy food, we take breaks, you know, travel कर लिया तो yeah, that is how I keep my Okay, wonderful. And if you could go back and say something to your 18-year-old self or 20-year-old self, you know, what would you say to yourself? oh yes, काफी कुछ actually the point is अगर वो अभी का 18 या 20 ईयर होता, राइट? बिकॉज तब का होता तब तो आई डोंट थिंक देयर वुड हैव बीन मच चेंज, बिकॉज उतना एक्सपोजर नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट नाउ अगर आज के टाइम में मैं 18 या 20 इयर्स होता, राइट, आई वुड हैव डेफिनेटली डेवल्ड इनटू बिजनेस फ्रॉम दैट एज, कुछ ना कुछ अपना करता रहता। इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग की या डूइंग समथिंग फॉर मनी, राइट? बिकॉज अगर मनी इज योर एंड गोल तब आप बहुत जल्दी हार हो जाएगी। बट बिकॉज देखो हर आई रियली बिलीव कि 18 जब मैं 18-20 इयर्स का था, राइट, तब मुझे क्या मजा आता था। सो आई एंजॉय मूवीज, राइट? मेरे को मतलब कुछ में जिसमें टाइम स्पेंड करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, जो भी है, राइट? उस टाइम नाउ आई डोंट नो कि उस टाइम क्या था, पर हाँ आई यूज्ड टू, मेरे को मूवीज और स्पोर्ट्स वाज माय गुड, की कोई भी नई मूवी आई देखता था, यूज्ड टू, यू नो, आई वाज दैट वे। सो आई कुड हैव वेरी वेल, क्या उसका मैं क्या कर सकता हूँ, यू नो, दैट थिंकिंग, दैट क्रिटिकल थिंकिंग, यार क्या इसके अराउंड में कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं शुड आई स्टार्ट राइटिंग समथिंग कि मूवी के लेट्स से कुछ साइट्स हैं बॉक्स ऑफिस इंडिया, तो ये उस टाइम क्या अगर आइडिया ट्रिगर होता यार, या बुक माई शो टाइप, राइट, यार मैं थिएटर्स को ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। सो वो जो होता है ना क्रिटिकल क्यूरियस माइंड, आई विल दैट इज व्हाट आई वांट टू बेसिकली, कि आप क्यूरियस हो, कि बी क्यूरियस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस, कीप आस्किंग कि मैं यार अपने पैशन के अराउंड क्या मैं और कर सकता हूँ। ओके, एंड इफ अगर आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करें, आज की डेट में जो बंदा आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू देम if the person is starting out their journey? When you say advice to like professionals who join our platform, वो designers, product managers, not your platform, the persons who are, you know, starting their UI UX career or management career. Okay, so I will. So yeah, one of the things that I really believe in is कि most of the जो UX होता है, ठीक है, थोड़ा theoretical frameworks you can study, which you can get on YouTube and all, you know, you don't really have to really pay a boot camp, I will say. But yeah, boot camp से seriousness आती है, but if you are interestingly motivated about that, you can very well learn from YouTube and all. But where you really have to then, my practical advice is start solving actual, मतलब build your portfolio and working for, वही ना कि आप जो साइट यूज करते हो, एज अ सेट हमने भी वही स्टार्ट किया कि UxHack, अगर आप UxHack पे हो, UxHack को इम्प्रूव करो एंड सेंड इट टू अस, राइट? तो उससे क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो बन गया और आपने अगर अच्छा काम किया, वी क्विकली हैव अ आई फॉर यू, कि कभी भी वी नो कि यार अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी मुझे, आई विल डेफिनेटली टच बेस विद दैट पर्सन। एंड आई थिंक स्टार्टअप्स को बहुत जरूरत है, राइट? सारे स्टार्टअप्स, सारे, आई थिंक दैट इज अ वे टू डिफरेंशिएट आज के टाइम में, नॉट ओनली फॉर प्रोडक्ट एंड डिजाइन। अगर आपको स्टार्टअप में एक जॉब करनी है या स्टार्टअप में अपना करियर बनाना है, आप कैसे आप कुछ काम करके फाउंडर्स को दे दो, बट डोंट, आई एम नॉट सेइंग कि आप एक महीना लगा के कुछ वैसा करो, बट 2 घंटा लगा के कुछ
करके दिखाओ उन्हें कि यार you prove your metal. show your passion, Yeah. show your Show your passion. enthusiasm ki you can do Correct. it, you want to do it. Yes, yes. I think that definitely helps. Wonderful. And आपके लिए mentors की क्या value है? Do you believe mentors help in your life? Do you have some mentors in your life? Yes, yeah. I think mentors सबके लिए जरूरत होती है. I don't think कि mentor. So obviously, for me, there are. So again, so it's not like one. It's not like एक mentor ही हो, right? Because obviously I believe no person is perfect, right? So you need to keep on inspiring, keep on taking inspirations based on उनकी जो अच्छी quality है, and that is where you have to seek mentorship from, right? So अगर आपको करियर की mentorship करनी है, then obviously you need someone जो उसी field में expert हो, right? But आपको life के mentors चाहिए, अपने life के mentors, right? So for me, one of my mentors is my father, that way, right? You look up to him, right? Yeah, because I think not only me, I think a lot of people will look up to him, that way. But how you conduct yourself, so thankfully it has come in my genes की, मतलब लोग बोलते हैं, I'm not saying, but humbleness हो गया, जो वो thankfully my traits वो पापा से मिले, but I keep on observing him, कि be honest with your work, be ethical, humble, that way, and treat everyone with equal respect and all. तो वो चीज उनसे आती है. Then there are, as I said, we look up to Nitin and Sridhar. Nitin from Zero था. I look up to them. उनके tweets follow करता हूँ कि वो कैसे चला रहे हैं, because वो उनकी जो advice is very real, right? At least for bootstrappers, right? मतलब जो अक्षर में है, we want to bootstrap. तो bootstrap में क्या कैसे चलाना चाहिए, क्या चलाना चाहिए, तो I look up to them very well, right? And वही, as I said, कि और mentors, and then there are I know personally couple of जो bootstrapping है, जैसे कि कुछ है Quantify के एक founder है, so I look up to him as a mentor. So yeah, there are different. So is there something mentors. you can mentor people on? You would like to mentor people on? So, I don't know, मतलब so one is obviously I think since थोड़ी journey हो गई तो yeah, how to start up, what not to do is what I can. But obviously there's no playbook, but based on my experience I can tell. So that is one thing definitely I can help. And yeah, life का थोड़ा जो भी experience रहा है. Amazing. Okay, so we are in the end game right now. Just a couple of questions left. Okay, it's already overshot, but just last few questions. Okay, is there something that we haven't covered and you would like to share on your own? I don't know, but I think one specific of so 2-3 questions, right? As I said कि काफी चीजें अभी भी ना startup advice जो बोलते हैं is not coherent. So there are, as I said कि I will say कि कोई अगर startup करना चाहता है तो जैसे कि don't actively chase funding is what I will definitely advise. Keep it very frugal, bootstrap रखो, अपने आप को जितना try कर सकते हो, get a co-founder and try to complement each other. And starting में मतलब पैसा फेंको मत कहीं भी, ना तो किसी पर्सन्स पे, ट्राई करो कि खुद ही काम करो, बिकॉज उससे क्या होता है तो आपकी खुद की स्किल डेवलप होगी, एंड यू गेट कॉन्फिडेंस कि एटलीस्ट आप उसे बेसिक स्टेज तक लेके जा सकते हो. कि लेट्स से बाद में लेट्स से कोई जना छोड़ के चला गया, लेट्स से आपकी कंपनी बढ़ गई, बट लेट्स से यू हायर समवन या यू आपने फ्रीलांसर लिया, बट लेट्स से उसने वर्क नहीं किया, बट देन यू कैन गो इनटू दैट एंड डू दैट. सो आई विल से कि इनिशियली डोंट डेलीगेट, सब चीज ट्राई करो अपने आप करने का, बट गेट अ को-फाउंडर. अकेले तो लग जाएगी, गेट अ को-फाउंडर एंड स्टार्ट डूइंग, बट स्टार्ट डूइंग मतलब वो क्या बोलते हैं सर, स्टार्टअप इज योर बेबी, सो आपको नर्चर करो, उसे खुद नर्चर करो, खुद नर्चर करो, खुद काम करो, बिकॉज देन यू विल रियलाइज कि कितना हर चीज में कितना एक वो है माइन्यूट थिंग्स आपको पता चलेंगे, नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इट, नुक्स कितना एफर्ट जाता है. जैसे कि हायर भी हम कर रहे हैं, अभी हम लोग हायर कर रहे हैं फ्रीलांसर भी. इट टेक्स सो मच एनर्जी टू इवैल्यूएट देम, टू इंटरव्यू देम. इट्स नॉट इजी राइट. सो पहले कि मैं जब जॉब में था, आई नेवर यूज्ड टू अप्रिशिएट, मुझे लगता था एचआर करते क्या है,
but it's not easy, right? That way. So वो हो गया. So I will say so startup के around इनफैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड मत बनाओ, बहुत चीजें एडवाइस हो सकती है, जो एक रूल बुक, वो एक रूल बुक हो सकती है, क्या नहीं करो इनिशियली फॉर श्योर, राइट. बैक अपना फाइनेंशियल प्लान रेडी रखो, फाइनेंशियल एज एन 2-3 साल का क्या बोलते हैं, पर्सनल फाइनेंशियल सॉर्ट आउट रखो. कि 2-3 years you Because can वो give to हाँ startup और आपका पर्सनल भी चलता रहा without affecting हाँ any of those या either of या those. या सो वो आई थिंक बहुत मेंटल पीस आपको देगा, you know. And yeah, so these are the some points I will say, you know, which are really helpful. And बाकी टेक रिस्क, बी अ रिस्क टेकर, जितने अपने obviously अपने एनवायरनमेंट के रहो, नॉट कि आंख बंद कर रिस्क, बट रिस्क yeah, रिस्क लो. रिस्क लो बट संभल के लो, एकदम ऐसा आंख मूंद के जंप नहीं मारनी है. हाँ करेक्ट करेक्ट, या वो सब वो क्लीशे बोलने के लिए होता है कि एक प्रोवर्ब है कि लीप ऑफ फेथ. इस हाँ हाँ लीप ऑफ फेथ लो, बट या यू शुड सी योर सराउंडिंग कि आपके एनवायरनमेंट क्या है उसके साथ. Yeah, okay, wonderful. How can our listeners know more about you and about your work? Which all platforms are you available? Are you still answering on Quora? Are you still on other platforms? Yeah, so I'm very active on Twitter, on LinkedIn, right? So UxHack के बारे में जानना है तो obviously if कहीं से भी you are remotely associated with design and product, so please join our platform. Search करोगे आप UxHack में, पहला जो भी link आएगा that will be on our of our site. बाकी personally if you want to connect, I'm available on LinkedIn, Twitter, and yeah, that's it. Reddit, but Reddit पे obviously this is different, but Reddit is also good way to, you know, build exposure, is how I will say. Right. Nishith, what was your favorite part about the episode? नहीं, first was I think thank you Ayush, as I said कि बहुत लोग मतलब what you rightly pitched, right, कि जब आप एक ब्रांड बन जाते हो, फंडिंग उठा लेते हो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, तब आपके पास ऑलरेडी मीडिया अवेलेबल रहता है, राइट. पीआर की न्यूज छप गई तो ऑटोमेटिकली लोग, राइट. बट बूटस्ट्रैपिंग अगेन आई विल से, तो बूटस्ट्रैप जो फाउंडर्स जो एक्चुअल आई विल से स्टिल व्हाट आई विल से 90% ऑफ द स्टार्टअप्स आर बूटस्ट्रैपिंग, राइट. ओनली 10% लोग फंड उठाते हैं, राइट. बाकी लोग, कुछ लोग बाय चॉइस करते हैं, कुछ लोग ऑब्वियसली जिनको फंडिंग नहीं मिलती इसलिए करते हैं. बट आई विल से जो बूटस्ट्रैपिंग करते हैं ना, बिकॉज़ उनके पास वी रियली डोंट हैव मच एवेन्यूज टू टेल, राइट, है ना. राइट. सो आई विल से, सो आई रियली एक्नॉलेज कि जो भी whoever give us a platform to, you know, tell about us, tell about our journey, UxHack, I really appreciate that way, you know. So that's all, Ayush. Thank you. I wish you all the success for the podcast series जो yes. भी आप कर रहे हो. Yes, right? definitely. And one final thought you would like you know, our listeners to leave with? Okay, so this I will connect to India that way. Yeah. I will say, I'm assuming, though it is for, I'm assuming it will go global, but I think India needs lot of entrepreneurs, lot of job creators. So I will say, अगर आप, as I said, अगर financial आपका liability नहीं है, and if you can do something, do it here. Don't settle abroad. Try to, because this is one of the finest way, obviously apart from RB and all, this is one of the finest way you can give back. अगर आपकी company बड़ी, you will create jobs in India, you know. So there's a lot of network effects, and that is again one of our even my end goal, you know. अगर उतना success बन गया, nothing like that. Okay, one last question. You have already answered it, but since the name is Startup Recipes, what according to you is the missing spice in startups? What according to you is the perfect recipe for a startup? According to you, I think there is no perfect recipe. First of all, there is no perfect recipe. But you said what is missing? Yeah, missing spice in those startups. I will say, at least based on what I read, I think frugality. Sorry? Frugality. Okay. Startup. So if I have to, frugality मतलब means होता है कि फूक के कदम रखो. Startup is all about that. ठीक है. I generally hate it कि आप you know फंडिंग उठा ले तो आप एकदम से बहुत हायर कर दो
फिर ले ऑफ कर देते हो. So I think it gives a very very bad blood, to the ecosystem. Right. Okay, that was it. Thank you so much, Nishith, for your time. It was a pleasureful talk, and Yeah, I same think here. in the last 1 hour we covered so many things, and so many things are still left. That आपके साथ 2-4 सेशन लेना पड़ेगा, तो भी आपकी knowledge इतनी ज़्यादा है कि it would be less for me. No, But nothing like thank you it. so But much for yeah, being here. good. Yeah, thank you again for having me, Ayush. Lovely talking to you, and all the best.